पब्लिक लोग कुछ तरह इतना बुरा बात बोलने लगा, दूसरी नज़र में मुझे देखने लगा। कोई बोल रहा था तू तो हमेशा के लिए गया, तो ट्रक को वापस नहीं आ पाओगे। कोई The 19-year-old Indian sprinter Duty Chand was forced out of action after tests revealed high levels of testosterone. She was subjected to gender testing to confirm her eligibility to race as a woman. This is not the first incident in India that this has happened. 2006 silver medal winner Shanti Soundarajan has been subjected to the ignominy of gender test. Female athletes whose bodies naturally produce high levels of testosterone are not allowed to compete unless they lower the hormone. Gender should not be the method by which we comprehend athletic ability and then question if a woman is not actually a woman. It disgraces athletes who don't perfectly align with one of their gender groupings. Performance in the sprints. Wearing number 2, she held off a challenge from Betty Moore to win the 100 yards in 10.6. We have decades of ways of policing women's eligibility going back to the time that they entered sport. And so there have been a lot of ways that sports governing bodies have tried to single out one sex trait as a way to divide people into male or female. More recently, what we've had are testosterone thresholds. And what's interesting to me about this is that they can do a test, say, oh wait, that's doping, or oh wait, that's your natural testosterone. If it's natural for men, they close the case. If it's natural for women, right, so they're not at that point doping, they actually get ushered in to a whole range of exams that include scans to look at your internal reproductive organs. They examine your genitalia. They try to read sex on the body. The impact of these policies is chilling. जब वो बच्ची थी, बहुत पुअर फैमिली थी, घर भी नहीं था, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हमारे पास एक साइकिल भी नहीं था, जहाँ जा रहे थे तो रनिंग करके या वॉकिंग करके जाना पड़ रहा था। 2003 में मैं ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दिया, मतलब दीदी के साथ मैं रनिंग शुरुआत किया। मैं इस टाइम में शायद 7-8 साल हो गई थी। मेरी दीदी शायद पता चल चुका था कि स्पोर्ट्स में जॉब मिलता है, तो वही जॉब को हिसाब लक्ष्य रख के मुझे बोला कि तू रनिंग कर, तू भी जॉब करोगे। तो वही हिसाब से मुझे वो ट्रेनिंग दिला था, लेकिन उसको इतना पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा एथलीट बन जाऊँ। जो यूथ नेशनल में मेरा मेडल आने लगा और रिकॉर्ड भी बनाया, तो मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुआ। நான் இந்த கிராமத்தில் கத்தக்குறிச்சி கிராமத்தில் தான் நான் பிறந்திருக்கேன். பிறந்தேன் இங்கே தான் நான் பிறந்ததுலேருந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். நான் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண காலத்துலேருந்து மற்ற அத்லீட் மாதிரி தான் நான் ஒரு நார்மலாக அத்லீட்டாக தான் ஃபீல் பண்ணேன். அவங்கள மாதிரி நல்லா ஜாலியாக ஒவ்வொரு காம்படிஷன் நல்லா ரொம்ப ஒரு ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஒவ்வொரு காம்படிஷன் நான் ஓடிருக்கேன். எங்கள் ஸ்கூல்லே அந்தளவு ஸ்போர்ட்ஸு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆரம்பத்தில். ஜஸ்ட் இயர்லி ஒன்ஸ் அந்த காம்படிஷன் மட்டும் தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த காம்படிஷனில் நான் ஓடுறப்போ எல்லாரையும் பீட் பண்ணிட்டேன். அப்போ நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன். நான் என்னோடய ஒவ்வொரு மெடலுமே அது அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு பெருமையான அளவுக்கு தான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் இது என்னோடய பிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் மெடல்ஸ். என்ன அப்படின்னா, இந்த ஒரு சாதாரண வில்லேஜில் பிறந்துட்டு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து ரீச் ஆகுங்கிற வந்து
சாதாரண விஷயம் இல்லை. A teammate in lane 3. There she is, Santi Sawundarajan, the heat winner yesterday. என்னோட நாட்டில் வந்து இன்னும் யாரும் ஒலிம்பிக்ஸ் மெடல் வாங்கலை அத்லெட்டிக் ஃபீல்டில். The final of the women's 800 meters. அந்த மெடல் வந்து வாங்கக்கூடிய சக்தி எனக்கு இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி 2006 நடந்த அந்த ஜெண்டர் டெஸ்ட் வந்து என் லைஃப்பில் ஒரு மறக்க முடியாதது. Was it Sawundarajan who took silver from Yellow Sabre? We'll need a photograph to separate those two. Winner of the silver medal, representing India, Sawundarajan Santi. Something of a late flourisher at the age of 25, Santi Sawundarajan of India. Heat winner yesterday. Then a very fast finisher today. Jiao Dip, the Kazakh athlete, with the silver medal. Our life for those who brought laurels to the country cannot get more cruel than this. 2006 Asiad silver medal winner who has been subjected to the ignominy of gender tests brings to the fore how insensitive a society we are to people whose gender or sexuality are different from what is regarded as normal. லைஃப்பில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் யாருக்கும் வரக்கூடாது. ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்ட்லேருந்து என்னை வெளியில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அப்படி என்ன தான் சாதிச்சாங்கன்னு தெரியல அவங்க அப்படி என்னை கொண்டு வந்ததுனால. One of the critical differences between Duti and Shanti's case is that the policy is different. And so during the time it was 2006 that Shanti was investigated, there was no option to lower your testosterone. You were simply banned for not having the proper sex traits. फोर्टीन 70 ईयर्स से अभी रिसेंटली मुझे 20 साल के इतना दुनिया के बारे में मुझे पता नहीं था, रूल के बारे में पता नहीं था. सिर्फ मुझे पता था कि डोपिंग टेस्ट एक होता है जो एथलीट को हमेशा टेस्ट देना पड़ता. मैं भी कितना बार दे चुका हूँ मैंने. जब वो रूल के हिसाब से हाइपरटेंशन शेड्यूल के हिसाब से पकड़ गया तो मुझे इस टाइम में बहुत दिक्कत लगा. दुनिया बारे में इतना पता नहीं था. पब्लिक लोग कुछ तरह इतना बुरा बात बोलने लगा, दूसरी नज़र में मुझे देखने लगा. एक ही सपना था कि यकीन था कि मैं फिर ट्रैक को वापस आऊंगी. क्या रनिंग दैट 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट. स्टार्ट और पीछे जाओ थोड़ा. या I was more worried than her. दैट स्टार्ट इज इंपॉर्टेंट. स्टार्ट थोड़ा पीछे जाओ. गुड रनिंग, गुड स्टार्ट. 7 throws enough. Because her age is that. Because 17, 18 years girl, she may not be knowing anything. What's happening about the life, what's the future. As a kid, she knows she's winning, getting medals. People are coming and congratulating. So suddenly things disappear. So once she said me, "Sir, I know only running. If God doesn't want me to run, then what I can do?" And she felt very, very bad because I too felt a person who has got a passion to do something and that is being taken away. ஜெண்டர் டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ இது ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. எதுக்கு பண்ணுறாங்க? நம்மளும் எல்லோரும் மாதிரி நார்மல் அத்லீட் தானே, எதுக்கு அத்லீட் தானே, நம்மளை எதுக்கு பண்ணணும் அவங்க? ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் ஜெண்டர் டெஸ்டிங் வந்து ஒவ்வொரு லைஃபை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணுறாங்க. The rule is when hyperandrogenism is more excess in the women, they got an undue advantage. They are not supposed to participate in women's session. If you want to participate, either you should go for therapy or surgery. But this was the rule. 10. एक सिंगल जंप्स. जो रोकने के लिए कोशिश कर रहा है, एक चीज़ मैं ये बताऊंगी, जो भी मेरे अंदर में है या मेरे जैसे एथलीट के अंदर में हाइपरटेंशन ज़्यादा है या कम है, वो भगवान ने बनाया. कोई खुद नहीं बनाया, कोई दवाई लेके नहीं लिया. तो जिसको भगवान जो दिया है, इसको अंदर से निकालने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं?
जिसको आँखों नहीं है, हम जितना भी कोशिश करें इसको आँखों नहीं दे सकते। जिसको जो बचपन से बातचीत नहीं कर सकते, हम जितना भी कोशिश करें इसको बातचीत नहीं, जो वो हम नहीं कर सकते तो जिसके अंदर जो चीज़ है इसका हम क्यों निकालें। उसने बोला इतना लंबी है, कोई चाहेगा तो इसको हाइट कम के लिए वो कर सकता है क्या। इतना हाइट होकर भी छोटा छोटा हाइट लोग के साथ भी रनिंग करे, इसको कोई नहीं रुक रहे। तो मेरा हाइट भी कम है, मेरा हाइट कितना है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं, जो मुझे भी फील नहीं होता कि मेरे पास ज़्यादा ताकत करे, तो मुझे क्यों रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। என்னென்னா ஒரு அத்லீட்டாக வர்றதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பான்னு நான் ஒரு அத்லீட்டாக அதை ஃபீல் பண்ணுறேன். அந்த ஸ்டேஜுக்கு வர்றதுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அவள் லைஃப்பை வந்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்க்காண்டியே டெடிகேட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அது மட்டுமே அவளோட 24 ஹவர்ஸ் ஜாபாக இருந்திருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு வர்றதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருப்பான்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ அப்போது வந்து அவளை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறப்போ நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு சாதாரணமாக கூட வரல, அவளை மீடியாவில் போட்டு நிறையா அசிங்கப்படுத்தி அவளுக்கு இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ, அவளுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருக்குமோ அந்த ப்ராப்ளம் நிறைய. पहले तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था फेडरेशन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने मेरा पर्सनल लाइफ को भी मीडिया में दे दिया। पहले तो जो जब मेडल ले रहा था कंग्रेस बोल रहा था, वो तो मीडिया में आ रहा था, बहुत खुश लग रहा था देख। लेकिन पर्सनल लाइफ में जब क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, एक बार ब्लेम हो जाता है तो दुनिया में सब बुरा बात बोलते, बुरे नज़र में देखते। बाद में जब पता चला कि मीडिया वाले ने मुझे हेल्प करने के लिए आ गया, कि इस बात को लेके मुझे हेल्प मिला, बहुत मदद मिला। हर जगह में फ़ोन आया मेरे पास, हर जगह में सब पेपर टीवी में दिया कि हम दीदी का मदद करना चाहते हो। This hyperandrogenism case happened, she got a support from every corner. Payashni Mitra, she was a social worker in gender discrimination. She came all the way from Calcutta to her village and explained the government, because before that nobody knows that hyperandrogenism what, why they are banning. Many people they don't know. Many people said better you go operated, or some people said now you're finished, because it's a world role in the world over, nobody has come back, so you finished, better you go home, like that. But she stood back. It was not my mistake. What mistake I did? So she's such type of character. When she doesn't do any mistake, when she's right, she will fight for anything. I'd set up a Google alert about the hyperandrogenism policies, and so in July 2014, I got a Google alert about Dudi because her name had been leaked to the press. So when that email came in, I read the story, and then I emailed Payashni, and of course she had heard about the case, and at that point I said to her, what, if anything, can I do, or what should I be doing? And very quickly, in a series of emails over a couple of days, she and I started thinking about what's even legally possible, right, around challenging this policy, if that's something that Dudi wanted to do. मैडम बोला और एक रास्ता है, हम केस लड़ सकते। स्पोर्ट्स एप्लीकेशन कोर्ट है, यहाँ पे हम केस लड़ेंगे तो वो हमको रूल दे देंगे, खेलने के लिए रिलीव करा देंगे तो हम खेल सकते हैं। तुम क्या चाहते हो, मेडिकल करना चाहते हो या केस करना चाहते हो, तुम बोलो। मैंने कहा मैडम मैं तो खुद को अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, पहले जैसे खेल रहे थे वैसे भी खेलते रहूँगा। मैं चाहती हूँ, मैं केस लड़ना चाहती हूँ। I don't think it's easy for people to understand what it means to challenge a policy like this. It means going against everything, for the most part, that you're told to do. It means going against Athletics Federation of India, Sport Authority of India,
IAAF. It means going against what people who are trying to influence you are whether that's coaches or sponsors or others. She's coming up against something that is incredibly powerful and saying, I shouldn't have to comply with this. मैं तो बहुत अंदर में डर गए थे इस टाइम में, किसको ऊपर बिलीव नहीं कर पा रही थी मैंने। तो मैडम मुझे जब बताए, खुद के बारे में मुझे बताया और बोला कि मैं पूरी मदद कर सकता हूँ। और जब मिनिस्टर ने वादा देखा, तुझे जो फाइनेंस लगेगा हम देंगे। पब्लिक मीडिया भी बोला मुझे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस में बोला हम तुम्हारे साथ हैं, हम जो करना है हम कराएंगे। तो फिर मैं भी चाहता हाँ मैं ऐसा करूँगा। Our side absolutely discussed the ways in which all elite athletes are in some way physiologically or biologically atypical. If they weren't, they wouldn't have excelled to the point that they did. There were these arguments made about massive androgenic advantage. That somehow this testosterone was jet fuel and Duty was going to be like Roadrunner, with the legs spinning, going, ahead of everybody. And the idea was, this is the only biological criterion that's regulated. And we had known at that point that the evidence wasn't there to support the policy, which is that women with naturally high T had such a significant competitive advantage and that they shouldn't be allowed to compete. According to me, every girl who has got a hyperandrogenism extra may not be a champion. You need some other quality, fighting spirit, talent, and training. I don't think of this as simply being a scientific question. I actually think it's an ethical question, it's a human rights question, it's a social question. It's not simply a scientific question, and it shouldn't just be ceded to science. But in that particular framework, science was the dominant question at hand. And roughly 4 months later, the decision came by email, and basically what it said is that this is a policy that discriminates against women. And the court said you can't discriminate against this group because the scientific evidence isn't there to merit that kind of discrimination. So against all odds, we won. And she always knew it. She always felt like we would win. What this means right now that the policy is suspended is that for the 2016 Olympics, there is no hyperandrogenism policy. This is a completely historical moment that's never been seen before. It's incredible. It means that women can compete without being regulated and policed and forced to undergo interventions or else be banned because they have a particular biological trait that doesn't fit what the IAAF wants. मुझे तो बहुत खुश लगा कि जो वर्डिक्ट दिया बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे जैसे गर्ल्स लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन स्पोर्ट्स लाइफ में जो लड़की फैमिली छोड़ के देश स्टेट छोड़ के बाहर में रुक के मेहनत करके देश का नाम रोशन, इसको बुरा करते हैं तो बहुत दुख होता था। இது ஒரு உண்மையிலே ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா இன்கேஸ் இந்த தடை பண்ணியிருக்க விஷயம் வரலனாக்கா நிறைய டூடி சந்தோ இல்லை மற்ற பேன் பண்ண அத்லீட்ஸோ யாரும் வந்து ஓடி இருக்க மாட்டாங்க. டூடி சந்தோ ஒரு சின்ன பொண்ணு இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவே திரும்பி பார்க்க வச்சுருக்கா. இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகத்தையே திரும்பி பார்க்க வச்சுருக்கான்னா நிச்சயமாக அவரோட ஹார்ட் ஒர்க்கு தான். அவளுக்கு எகெயின்ஸ்டாக நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அப்போ நான் டூடி சந்துக்கு நான் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணேன். அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ஒருத்தவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து என்னை பொறுத்தவரை ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் எனக்கு அது. ஸோ டூடி சந்த் இன்னும் இந்தியாவுக்காண்டி மெடல் வாங்கணும். இந்தியாவுக்காண்டி மட்டும் இல்லை, அவள் வந்து டோட்டல் அந்த ஒரு பெண்களுக்கான ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கா இப்போது. ஸோ டூடி சந்த் இஸ் ரியலி கிரேட் அத்லீட். कर रहा है 30 10 1 गुड
ये ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए मुझे 14 साल लगा, बचपन से लेकर अभी तक। मुझे तो अभी बहुत खुश लग रही है कि इतना दिनों के बाद जो सपना मेरा पूरा हुआ, अभी पार्टिसिपेट देश का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ज़्यादा कर 36 ईयर के बाद जो 100 मीटर में क्वालिफाई किया है मैंने, पहली लड़की, तो इसका मायना बहुत होता है। सब लोग का ध्यान मेरे ऊपर नजर रहता है। जो ओलंपिक क्वालिफाई करने के बाद जो ट्रेनिंग हो रहा है, बहुत कठिन और कष्ट का ट्रेनिंग हो रहा है। पहले बॉडी का केयर इतना नहीं ले रहा था, ट्रेनिंग में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, जो भी दे रहा था थोड़ा थोड़ा। पहले तो मैं जहाँ जा रहा था तो मुझे कोई पहचान नहीं थी, लेकिन अभी तो मुझे हम कोने कोने में पहचान लिया सब, मतलब द्युति चांद करके, स्प्रिंटर रनर करके। मुझे अभी बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है। She doesn't have any other focus. She's like a small kid, comes enjoy training, joking around. That's all, nothing serious. Because I know her passion. See, whatever you do, she comes and train, and whatever hard training, she never says no. She never says no. You want one more rep? Okay, sir. I was really happy when Duty qualified for the Olympics. Who knows if we'll ever have this moment again? I mean, this might be the one blip where we were on the right side of history and it happened, and, you know, it can go away. And so it's important to witness this. It's important for all of us to witness it, and support these athletes who are actually for a moment being treated fairly. तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ, दुनिया में पैदा हूँ, दुनिया में जितना दिन रुकूंगी दुनिया के लिए अच्छा करूँगी, देश के लिए अच्छा करूँगी। तो इसको सोच के मैं हमेशा ट्रेनिंग करता हूँ, और जो भी करता हूँ तो मैं इसको याद रखता हूँ कि मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, कुछ करके जाऊँगी।